Now in this video we are going to see IUPAC nomenclature of organic compound. For this we are going to start with alkanes, IUPAC nomenclature of alkanes, and then we'll proceed to all the classes of compound that we have in organic chemistry. Generalized naming we'll consider. For the purpose you need to understand three basic rules. First, I am expecting from you all to mug up these rules to the extent that you will remember all three rules in the number sequence. Okay? Then there are three simple rules of IUPAC nomenclature. First rule is select the longest and continuous chain of carbon atoms. Longest, and it should be what? Continuous. These two words are important. Select the longest and continuous chain of carbon atoms. Then you have to consider, or you have to number the chain from the terminal which is closest to the functional group or a branch point. You will be understanding this by examples that I am taking, but you have to mug up this rule. Number the chain from the terminal which is closest to functional group or a branch point. Then identify and locate the substituent or group. You have to what? You have to identify and then you have to what? Locate the substituent group. Then you have to name the compound. Again I will revise all these three rules. We are going to consider IUPAC nomenclature of organic compound in today's session. In that nomenclature, first you have to consider naming of alkanes. For that purpose I am giving three simple rules. You are not going to ask or you will not be asked rules, but you have to remember rules for naming the organic compound. First is selection of longest and continuous chain of carbon atoms. You have to select the longest and continuous chain of carbon atoms. Then it is second, number the chain from the terminal which is closest to what? Functional group or a branch point. This you will understand later. Identify and locate the substituent or group. I am expecting from all of you to consider these rules and remember them as it is. Fourth rule is negligible. It is what? Name the compound. That's why we are studying this topic. In this I'm starting with the example. Consider you have this compound CH3, CH, CH2, CH3, and as you are considering this carbon has only three bonds, one with this carbon, one with this carbon, and one with hydrogen. So I am putting this CH3 here. I am giving the compound. You have to name it. First I will start with this three simple rules. I will go through these rules and name this compound that you will understand. First is what? Select the longest and continuous chain of carbon atoms. Then for the compound, this is the compound, you have to select the longest and continuous chain. Then this compound contains 1, 2, 3, 4, 5 carbon it contains, but you have to select what? Longest and continuous chain. Now this longest and continuous chain generally is the straight chain, but in some example it can be different, it can be zigzag chain. But in this compound, this carbon I am taking into consideration, from this carbon, then this carbon, and this carbon, then these are 4 carbons in longest and continuous chain. This is the chain selection I am doing. I can't select this carbon also because it will not make a chain. So it is what? 4 carbon longest and what? Continue chain of carbon atoms. Then if it is done, this is you can also select the chain like this also, this one, this 4 carbons you can also select because it is the same longest and continuous chain. But if you are selecting this also and this straight chain also, it will not make any difference. Then I will again select the longest and continuous chain, this one. Then I will go to second rule.
Second rule states that number the chain from the number the chain from the terminal which is closest to substituent or group or a branch point functional group or a branch point. Then you have to number this chain. Now this chain has two terminals. Every chain has two terminals. One terminal is this one and other terminal is this one, but you have to number the chain. First I will number it wrong, then you will be easily understanding. This carbon I am numbering as 1, this as 2, this as 3 and this as 4. Then 4 carbons are numbered like 1, 2, 3, 4. Then I will number it right, that is 1, 2, 3, 4. Now what is right and wrong here? This is wrong numbering and this is what right numbering, because this is your substituent and it is present at second position in second right numbering, but in wrong numbering it is present at third position. Now this CH3 is attached to this carbon which is at third position in this wrong numbering but at second position in right numbering. So you have to neglect this wrong numbering. Why we are neglecting the wrong numbering? Because you consider this rule second again. Terminal which is closest to functional group or branch point. Now any chain, this is like say some tree branch and this is sub branch, so this CH3 is attached to second, so this is the right numbering, and 1, 2, 3, 4 that wrong numbering you know. Then you have to consider the numbering the chain from the end which is closer to substituent or branch point. This is also sometimes called as lowest locant rule. Lowest locant rule states that you have to number the chain from the terminal which is closer to what? Substituent or branch point. Then you have to consider third naming. I will rub this all, then you will be understanding it again. Lowest locant rule. Then compound was like this: CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Then this compound I am using first rule. I am selecting the longest and continuous chain of carbon atom. This is the longest and continuous chain of carbon atom. Then second point is I have to number this from 1, 2, 3, 4, not like 1, 2, 3, 4, because this gives this CH3 second number, that is the lowest possible number. Then consider third rule. Third rule is identify and locate the substituent. If you are identifying the substituent, this is not the part of chain that we have selected, so this is called substituent. If it is not the part of the chain that we are selecting, then it is called what? Substituent. Then this substituent is given name, that is methyl, because CH3 group is what? Methyl group. Then third rule states that you have to locate the substituent. Then this methyl group is at present at second carbon of the chain that we have already selected by rule 1. So the name of this compound will be 2 methyl. Then you have to select the parent of this compound. Whatever the name or whatever the chain you have selected, that is 4 carbon chain. This longest and continuous chain is of 4 carbon. So 4 carbon alkane is your butane. This you have to remember, it is what? Butane. So you have to only name this compound as 2-methyl butane. I hope you understood this first example. We can proceed to another example, then you can understand what we are talking about. Then
If it is this kind of compound, CH3, CH2, CH, CH3, then it is CH, then it is CH3, then it is CH3. If this is your compound, then you have to select the longest and continuous chain. I will select it wrong first, then you will understand. Someone, if it is selecting this chain, then it only contains what? 4 carbons, like 1, 2, 3, 4. Then this is what? Wrong chain selection. Then if it is wrong chain selection, then again one wrong chain selection will be like selecting this chain. This is only containing 3 carbon, and we are going to select the chain which is containing longest and continuous carbon atoms. So this is essentially, if you are considering, if you are giving closer attention to this compound, longest and continuous chain will be of these carbons. There are this 5 carbon present in the chain, so this is your longest and continuous chain. Then this will be your what? Substituent or a branch point, and this is also your what? Substituent or branch point. Then if you have to consider these rules again, then select the longest and continuous chain of carbon atom that we have already selected. This is the longest and continuous chain of carbon atom. We can also consider the parent of this chain. Parent of this chain will be the alkane containing 5 carbons. So it is what? Alkane containing 5 carbon will be what? Pentane. This you have to remember. Then I will give the list here. 1 carbon alkane, 1 carbon alkane, 1 carbon alkane is methane, this you know. Then 2 carbon alkane is ethane. Then 3 carbon alkane, it is what? Propane. Then 4 carbon alkane, that is what? Butane. The structure you know, this is CH4, this is what? C2H6, and this is what? C3H8, and this is what? C4H10. Then it is 5 carbon alkane, that is pentane. Then you can continue writing this as hexane, and you have to apply the general formula like what? Cn H2n plus 2. Then you can easily write the formulas of this alkanes. Hexane, then it is 7 carbon, that is heptane. Then it is 8 carbon, that is octane. Then it is 9 carbon, it is what? Nonane. Then it is 10 carbon, that is what? Decane. This up to 10 carbon you have to remember: methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, and nonane. This is what? 6 carbon, 7 carbon, 8 carbon, 9 carbon, and what? 10 carbon. Then if going back to our example, first we complete this table, so you can write this table in your notebook. This is what? C5 H12, this is C6 H14, heptane is C7 H is 16, then C8 H18, then it is C9 H20, and then it is C10 H, it will be 22. Okay. So this is your entire picture of this alkane parents that you can consider naming while naming alkanes. Then this was your chain, and the chain was what? Butane. Then you completed your first rule, that you have to select the longest continuous chain of carbon atom. Then you have to number this chain. If I am numbering this chain as 1, 2, 3, 4, 5, then it will be wrong, just because it will give my first branch as number 3. But if you are considering that this is wrong, you have to number this chain from this side, this terminal, because it is 1, 2, 3, 4, 5, just because second carbon carries the substituent, so it will give the lowest number to the substituent. This is again be 3 from this side also and this side also, but this branch is closer, then you have to number from this side. If you are not understanding this rule,
after few examples, after few more examples, you will be able to understand. Then you have to name, you have to consider the third rule. Third rule was what? Third rule was identify and locate the substituent or group. If you are identifying the substituents, this is what? This is methyl substituent, this you know, and this is also what? Methyl substituent, this also you know. Then you have to name this compound as 2, 3. Then there are 2 methyls. If you are numbering, if you are naming it like this, suppose you are naming like 2 methyl and 3 methyl, then it will be wrong. So you have to number like methyls are same, so you don't write methyl again, you write like 2 and 3 di, because di matlab it is what? 2 methyls, dimethyl. Then you don't leave any gap between methyl and this parent, it will be what? Pentane. So this will be one word name of this compound. So it is what? 2,3 dimethyl pentane. Consider this 2,3 dimethyl pentane. So how I numbered this compound and how I considered the chain, this you have to understand. Again I am giving other examples, C, 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 C. Then this contains this C2H5 group, suppose, and I am extending the chain like this. Then its C2H5 can be written as CH3CH2, CH2, CH3. This all the carbons are having completed their valencies. तो यहाँ पे क्या करना है? सपोज ऐसा है, ये कंपाउंड है आपके सामने, तो क्या आप इसको नाम दे सकते हो? पहले तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या नाम दे सकते हो? तो आप बताओ मुझे कैसे नाम देना है इसका। तो सपोज़ आपका लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूस चेन ढूंढना है, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन यहाँ पे जनरलाइज वे में शुरुआती एग्जांपल्स में स्ट्रेट चेन ही आपको मिल रहा है। तो स्ट्रेट चेन विल बी योर लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूस चेन, बट दिस CH3 is not the part of your longest and continuous chain. So you have to remember, if it is not the part of your longest and continuous chain, then you have to give the example like give the substituent name like ethyl, because this is what? CH3CH2, so it is what? C2H5, so it is ethyl that we considered in R group discussion, alkyl group discussion. Then you have to number this compound from which side. Then I will write this side first, 1 2 3 4 5 6 and 7, second rule I am considering. Then I will number from this side, 1 2 3 4 5 6 and 7. Then you apply this or this, it will give the same number to our substituent. That means this ethyl group is present on which carbon of your main chain that you have selected is 4th carbon of this main chain. So this is also the right numbering and this is also right numbering, so you can consider numbering anyhow from this side also and from this side also. So I will rub one of the numbering, all 2 numberings are right one, but you have to consider numbering from each side and you have to consider it should give a lowest possible number to what? Your substituent. That is not the substituent is what? Substituent is not the part of your main chain. Then this is your main chain, this is your what? Substituent. Okay, this is the main chain and this is your substituent. Then can you name this compound? Yes, I can name this compound as what? 4. We have to state the position first, 4. Then it is what? Ethyl, because 4 position is having what? Ethyl group, and it is what? 7 carbon alkane, so it is what? Heptane. Then this name is giving you complete presentation of the following molecule, because 4 position carrying ethyl. Ethyl मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन, और हेप्टेन मतलब कितने कार्बन? 7 कार्बन। तो 2 कार्बन और 7 कार्बन कितने हो गए? 9 कार्बन हो गए। तो 9 कार्बन यहाँ पे दिखने चाहिए आपको, देखो ये 7 हो गए, 7 8 और 9, तो दिस इज 9 कार्बन. सो यू आर करेक्टिंग, यू आर giving correct name to this compound. Then this is what? 4-ethyl heptane. Now we'll give other example of this. I will keep on giving examples
till you understood this fully, this is the chain. Then suppose this is the methyl group attached, this is methyl group attached, this is methyl group attached, CH3, CH3 and CH3. This is CH3, CH, CH, CH and CH3. Then you have to number this chain. You have to first select the longest and continuous chain. Tell me which will be your longest and continuous chain. You can select this chain, like how many carbons are in this chain? 1, 2, 3, 4, 5. Then you can select again another chain. You can select another chain like this CH3. Then you can select another chain by considering this chain. Okay, this is containing what? 1, 2, 3, 4, 5 carbon in your chain. CH3 attached to this carbon and this carbon and this carbon. Then you have to start numbering this chain. You can number it from this side 1, 2, 3, 4, 5. Then first is your what? सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर के कार्बन पे आ रहा है? सेकंड नंबर के कार्बन पे आ रहा है. और यहाँ से अगर नंबर देते थे तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आता था? सेकंड नंबर के कार्बन. तो आप यहाँ से भी नंबर दे सकते हो और यहाँ से भी नंबर दे सकते हो. दोनों से नंबर दिया तो भी क्या हुआ? सेम ही बात हुई. तो आपको क्या करना है? अब थर्ड रूल का इस्तेमाल करना है. आइडेंटिफाई एंड लोकेट द सब्स्टिट्यूएंट. दिस इज़ व्हाट योर मिथाइल ग्रुप. दिस इज़ ऑल्सो व्हाट योर मिथाइल ग्रुप. This is also what your methyl group. Then there are 3 methyl groups and they are attached to what? Second, third and fourth carbon. So start giving the name to this compound. 2, 3 and 4. 2, 3, 4 I am writing here. 2, 3, 4. Then I am writing tri because there are 3 methyls. And then it is what? Methyl, trimethyl. And then parent will be what? Pentane, just because selection of this longest continuous chain given you the parent of this compound, and parent of the compound is what? Pentane. So it is what? 2, 3, 4 trimethyl pentane. This will be your what? Name of this compound. Then if you understood this, I will give another example. Suppose you have this kind of compound. Here you will do wrong because there are chances that you will miss the rule number 1. First, you tell me this all the carbons are having valency of 4. You can consider it by considering all the carbons and their valencies. Check any carbon with more or less valency than 4. Then if I told you to apply rule number 1 here, then you have to what? Select the longest and continuous chain. Longest and continuous. What is mean by longest and continuous? That chain should be longest and then chain should be what? Continuous. You don't go like this. You can't select the chain like 1, 2, 3, 4, 5 and then again go by this way. This is not your chain. Chain should be what? In straight line. So if it is so, then if you are selecting this chain like this, I will show it by different color. This is your chain. Then this will give you wrong name because this chain carries how many carbons? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbons only. If you are considering longest chain of 5 carbon, then you are wrong because you have to consider the chain which is longest. So anybody of you is finding the longest continuous chain. So this should be your longest and continuous chain. This should be your longest and continuous because this chain is considering the carbons. Actually there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon in this chain. So 5 carbon chain is not longest, 6 carbon chain is longest. Then you have to number the chain. First I will give wrong number. It is what? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. You consider where your branch point start. यहाँ पे अगर मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 किया तो ब्रांच पॉइंट कहाँ पे चालू हुआ? ब्रांच पॉइंट ये थर्ड नंबर के कार्बन से चालू हुआ जहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, फिर फोर्थ पे है, फिर फिफ्थ पे है, लाइक दिस. अगर ब्रांच पॉइंट को थर्ड नंबर आ रहा है तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से नंबर दूँ 6 वाले से
तो ब्रांच पॉइंट को मेरा 2 नंबर आ रहा है, तो 3 नंबर चलेगा या 2 नंबर चलेगा, तो 2 नंबर चलेगा। तो मेरी चेन तो यही है, चेन तो यही है, लेकिन नंबर करना अच्छे से जान लो। नंबर कहाँ से करना पड़ेगा मुझे, यहाँ से। तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन और ये 6th कार्बन। देन ये मिथाइल को कौन सा नंबर मिला, 2 मिला। इस मिथाइल को कौन सा मिल रहा था, 3 मिल रहा था। तो ब्रांच पॉइंट नज़दीक होना चाहिए। तो सेकेंड रूल समझ गए, lowest locant rule. That means your branch point or substituent should carry the lowest number. Then you can start naming this compound. First I will rub this rule. So can you name this compound? So start with this parent. Parent will be what? Parent will be hexane. So you write parent here in rough work, hexane. Then you number the chain. You have already numbered the chain. Then you write the position 2 first, then position 3, and then it is position 4. Why I am writing 2 3 4? Because 2 is also carrying methyl group, 3 is also carrying methyl group, and 4 is also carrying what, methyl group. So it is what, tri methyl, then it is what, hexane. Then it is 2 3 4 dimethyl hexane considered. Then start with another example. This is your example. I am giving example now in bond line fashion because we are considering only alkanes, that we are considering this one. Now this is your compound, suppose. Then you have to select the longest and continuous chain. Then tell me how many carbons are there in longest continuous chain. If you are selecting like this, then you are getting how many carbons in your chain, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Now 8 carbon long you are getting, but if you are selecting from this side, suppose now if you are selecting this chain, okay, this chain, if you are selecting this chain, then you will be getting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन मिल रहा है। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कौन सी हुई, 9 कार्बन की चेन हुई लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूस। देन अप्लाई सेकेंड रूल दैट स्टेट्स यू हैव टू नंबर द चेन। ठीक है, तो नंबर, टर्मिनल नंबर 1 ये हुआ और टर्मिनल नंबर 2 ये हुआ। ठीक है, टर्मिनल नंबर 1 2 नहीं, ये 2 टर्मिनल हुए, 1 2 नहीं बोल सकते उसको, ये 2 टर्मिनल हुए। सपोज़ ये 2 टर्मिनल है और आपको उसको नंबर करना है, तो आप बताओ नंबर कहाँ से करेंगे। अगर यहाँ से चालू किया तो इस कार्बन को क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इस कार्बन को क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और इस कार्बन को क्या मिल रहा है, 3। तो 3 को आपको क्या मिल रहा है, 3 को आपको ब्रांच पॉइंट मिल रहा है, मतलब क्या, 3 से एक ब्रांच निकली है बाहर। और यहाँ से अगर करोगे तो 1, फिर इसको, इस कॉर्नर को 2 देना पड़ेगा, फिर 3, और 3 को क्या मिल रहा है आपको, ब्रांच मिल रही है। तो आप कंसिडर करो कि 3 को अगर ब्रांच मिल रही है तो यहाँ पे आपको कंसिडर करना होगा कि आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो, क्योंकि किसी भी साइड से नंबरिंग अगर आपने किया तो भी आपको 3 को ही क्या मिल रहा है, ब्रांच मिल रही है। अगर ऐसा है तो मैं पहले तो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये चेन थी हमने सिलेक्ट की हुई रूल के हिसाब से, लॉन्गेस्ट एंड व्हाट, कंटिन्यूस चेन जो आपने कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, उसको नंबर कर देता हूँ। नंबर किसी भी साइड से करना चलेगा, तो यहाँ से करता हूँ। 1 कार्बन, इस कार्बन को 1 दे दिया, फिर इस कार्बन को क्या दे दिया, 2, फिर इस कार्बन को 3, इस कार्बन को 4, इस कार्बन को 5, इस कार्बन को 6, इस कार्बन को 7, इसको 8 और इसको 9। सपोज़ ऐसा है। तो अगर ऐसा आपका नंबर हो गया तो आपको आइडेंटिफाई एंड लोकेट द सब्स्टिट्यूएंट करना है। बच्चों ये कार्बन है, तो ये कार्बन कौन होगा, इसका एक बॉन्ड कंप्लीट है, तो 3 क्या हो गए, CH 3 H होंगे। तो ये ग्रुप कौन सा हुआ आपका, मिथाइल ग्रुप हुआ। यहाँ पे CH2 है, क्योंकि यहाँ के 2 बॉन्ड कंप्लीट है और कार्बन है, तो 2 H होंगे, तो CH2, और यहाँ पे क्या है, CH3। सो दिस इज़ व्हाट, CH3 CH2, दैट मीन्स ये कौन सा ग्रुप हुआ आपका, इथाइल ग्रुप हुआ।
और यहाँ पे जो एक कार्बन है उसके 3 H होंगे, मतलब क्या हुआ, वो मिथाइल ग्रुप हुआ। तो आपके कंपाउंड में 7वें कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है, तीसरे कार्बन पे भी एक मिथाइल ग्रुप है और 5वें कार्बन पे एक इथाइल ग्रुप है। तो कोई मुझे नंबर नेम बता सकता है? तो ट्राई करो, गलत सही देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा पहले, फिर क्या लिखना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा। 3 और 7 पे डाई मिथाइल है, लेकिन आपको एक और रूल बता दूँ मैं, यहाँ पे रूल्स आते जाएंगे थोड़े बहुत, यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ। तो कन्विंस करो खुद को कि दो दो टाइप के सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे प्रेजेंट है, एक इथाइल वाले है और एक क्या है, मिथाइल वाले। तो ई पहले आता है या एम पहले आता है? तो ई पहले आता है, तो अल्फ़ाबेटिकली आपको नेम देना पड़ेगा। तो आपको पहले लिखना पड़ेगा 5, उसके बाद लिखना पड़ेगा इथाइल। तो आपके पास 5 इथाइल हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं ये डैश मिटा के यहाँ पे क्या कर दूँ, 5 को इथाइल है, उसके बाद एक डैश कर दो, फिर उसके बाद आपको 3 लिखना पड़ेगा, कॉमा 7 लिखना पड़ेगा। 3 7 क्यों लिखा? क्योंकि 3 नंबर पे और 7 नंबर पे दोनों पे आपका जो ग्रुप है वो सेम है, तो 3, 7। और कितने ग्रुप है मिथाइल? तो 2 ग्रुप है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा डाई मिथाइल 3, 7, so it is what, dimethyl. Then you can consider naming the parent. सो यहाँ पे गैप नहीं देना है, स्पेस बार नहीं दबाना है। तो पेरेंट कौन सा हो गया? तो पेरेंट हो गया नोनेन। अब नोनेन क्यों हुआ पेरेंट? तो आपके मेन चेन में कितने कार्बन है? 9 कार्बन है। तो 5 इथाइल 3 7 डाईमिथाइल नोनेन, ये इसका क्या हो गया? नाम हो गया। तो ये अगर एग्जाम्पल समझ गया तो अगला एग्जाम्पल आप करो। अगला एग्जाम्पल वीडियो पॉज करके, मैं पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर वीडियो पॉज करके उसको ट्राई करो, आप लिख सको तो अच्छा ही है। यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे ऐसा है, तो दिस इज़ योर चेन सपोज, ठीक है, दिस इज़ योर कंपाउंड। देन कंसिडर इस कंपाउंड में कितने कार्बन थे? ऊपर वाले कंपाउंड में 5 पोजीशन को कौन था? इथाइल। इथाइल मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन, ठीक है। फिर 3 और 7 पोजीशन पे मिथाइल था, तो 3 और 7 पोजीशन पे डाई मिथाइल था। तो मिथाइल मतलब 1 कार्बन और डाई मतलब 2, तो 2 मिथाइल कार्बन के 2 कार्बन आ गए। और नोनिन के कितने कार्बन? 9 कार्बन। सो 2 + 2 + 9, सो इट कम्स टू व्हाट, 13 कार्बन। और फिर 13 कार्बन आप यहाँ पे ढूंढो, 13 कार्बन है क्या आपके पास? 9 कार्बन ये, 10 11 12 13, ठीक है। तो 13 कार्बन आपके हो गए, मतलब आपका नेम क्या है? करेक्ट है। अब इस कंपाउंड को आपको नाम करना है। तो पहले तो आपको क्या करना है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम। तो आपको लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम ढूंढो। मुझे तो मिल गई, इमीडिएटली मिली। ये आपकी चेन होगी लाइक दिस इज़ योर चेन। तो अगर ये आपकी चेन है तो सब्सटीट्यूएंट कौन से हुए? ये एक सब्सटीट्यूएंट हुआ इथाइल, और ये भी एक इथाइल हुआ, क्योंकि CH2CH3 है, तो ये इथाइल लिख देते हैं यहाँ पे भी इथाइल लिख देते हैं। फिर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में कितने कार्बन है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। तो पेरेंट कौन हो गया? हेप्टेन हो गया। लास्ट को हेप्टेन लिखना है आपको। फिर आपको नंबर करना है। नंबर बताओ कहाँ से करेंगे? एक मैं करता हूँ, आप बताओ सही है, यहाँ से करेंगे 1 2 3। फिर सब्सटीट्यूएंट को कौन सा नंबर आ रहा है? 3 नंबर आ रहा है, हाँ या ना? इथाइल को कौन सा ब्रांच पॉइंट, पहला ब्रांच पॉइंट को कौन सा नंबर आ रहा है? 3 नंबर आ रहा है। यहाँ से करते थे तो 1 2 3। सपोज़ मैं पहले पहला मिटा दूँ, हाँ यहाँ से करते हैं सपोज़, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 3, और ब्रांच पॉइंट को कौन सा आ रहा है? 4। तो कौन सी मेथड सही है? 1 2 3 इधर से सही है या इधर से सही है? तो इधर से 4 नंबर आ रहा है, इधर से 3 नंबर आ रहा है ब्रांच पॉइंट को, तो आपकी मेथड कौन सी सही है? यहाँ से आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। कहाँ से? यहाँ से। तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इस कार्बन को 4, इस कार्बन को 5, इस कार्बन को 6, इस कार्बन को 7। तो अब बताओ थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। फोर्थ पोजीशन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप नाम कैसे लिखोगे? 3,4। अब 3,4 क्यों किया? तो दो दो पोजीशन है, दोनों पे सेम ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए क्या लिखा? डाई इथाइल। 3,4 डाई इथाइल, और यहाँ पे क्या लिख दिया? हेप्टेन। नाउ 3,4 डाई इथाइल हेप्टेन विल बी योर नेम ऑफ द कंपाउंड। आप समझ लो कि डाई इथाइल हेप्टेन क्यों हुआ। तो 3 और 4 मतलब थर्ड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे डाई इथाइल है। इथाइल मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन। लेकिन डाई है मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन।
2 बार इथाइल है ना, मतलब 4 कार्बन, और हेप्टेन में कितने कार्बन होते हैं, 7 कार्बन। तो 4 + 7 मतलब कितने कार्बन होने चाहिए, 11 कार्बन होने चाहिए। तो आप बताओ 11 कार्बन है कि नहीं इसमें, 7 ये, 8वां, 9वां, 10वां और ये 11वां, तो ये 11 कार्बन हो गए। तो यही आपका सिलेक्शन होगा, यही इसी तरह से आपको अल्केन के नेम देने होंगे। अब ये बेसिक हुआ थोड़ा, उसके बाद हम अगले एग्जांपल्स में, मतलब अगले वीडियो में नेमिंग और कैसे करते हैं, ये बेसिक कैसे नेमिंग और मतलब रूल्स कैसे याद रखेंगे और कैसे करेंगे ये देखेंगे। आईपीएसी एक बड़ा टॉपिक है बच्चों, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अगर ये बड़ा टॉपिक है तो इसको 1 बाय 1 क्लियर करना पड़ेगा, इसको एक ही लेक्चर में हम पूरा नहीं ले सकते। तो आज के एग्ज़ाम्पल आप समझ जाओ, सारे एग्ज़ाम्पल मैंने आपके यहाँ पर पुट कर दिए हैं। ये एग्ज़ाम्पल अगर आप समझ गए तो, और ये 3 रूल ये अगर आप समझ गए तो आपको अच्छे से आ जाएगा जो भी मैं बात कर रहा था इस लेक्चर में। तो अगर आपको ये कंफर्टेबल मतलब लगने लगे स्ट्रक्चर, तो हम थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी की ओर अगले लेक्चर में बढ़ेंगे। थैंक यू।